Good morning, everyone. Let's begin our lecture with. Okay, let's begin our lecture with nervous system. तो आज जब हम nervous system पढ़ेंगे, तो उसमें we will understand the basics of central nervous system, peripheral nervous system, and we will directly jump towards reflex act. क्योंकि ये important concept है, ये समझने में कभी-कभी मुश्किल होती है. तो let's make it very clear with a handmade diagram. चलिए, तो start करते हैं आज. हम्म, चलो. So let's first understand what is the basics of central nervous system and peripheral nervous system. तो देखिए होता क्या है, our nervous system, it is basically of two types. It is divided between two types, two basic branches. One is CNS, central nervous system. Second is peripheral nervous system. The very basics, how to understand the central nervous system, एक बहुत normal language में मैं आपको बताऊं. If it is your body, let's hope it is not. So, what is the central portion? This is your central portion. This is your central portion, your head. So, in central nervous system, what all comes under central nervous system? Central nervous system के अंदर क्या क्या चीजें आती है? Number one, it's brain. Brain. Then we have spinal cord. Spinal cord. So basically होता क्या है? होता क्या है? Let me draw a crude diagram of brain. Hypothetically, if it's a brain, this is your cortex part, ऊपर ऊपर का part. फिर आपने सुना होगा small brain. So with the brain, there's a structure connected over here, which is known as spinal cord. This is your spinal cord. देखिए अब होता क्या है, अब होता क्या है, आपको पता होगा हमारी बॉडी में से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक जाती है. तो ब्रेन तक जाने के लिए यू रिक्वायर अ पाथ, यू रिक्वायर अ रोड. दिस पाथ इज प्रोवाइडेड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड. Okay, so this component which I have drawn here, it is central nervous system. Okay, and what is peripheral nervous system? Anything which is emerging, which is emerging out of, which is emerging out of here, or or going towards, going toward. Okay, let me draw going toward, which is going inside as the blue color. Okay, for better distinction. So ये जा रही है नर्व्स अंदर एंड कुछ नर्व्स बाहर आ रही. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व्स इन अ होल? तो नर्व्स क्या करती है? बेसिकली इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड इट टू द ब्रेन. तो ब्रेन तक जाने के लिए वी हैव दिस होल मैकेनिज्म. ओके, सो दिस पेरिफेरल पार्ट, द नर्व्स द नर्व्स द नर्व्स इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है, यहाँ पे एक चीज और समझते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर पढ़ ही रहे हैं तो देखिए, हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अच्छा, देयर इज नो वंडर इन टेलिंग यू गाइस कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है. सबको पता है ब्रेन कोऑर्डिनेट्स आवर बॉडी. ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन. सीपीयू पता है ना, सीपीयू, कंप्यूटर में सीपीयू होता है. आजकल तो सीपीयू वाले बच्चे हैं, मतलब कंप्यूटर के जमाने वाले बच्चे हैं. तो सीपीयू क्या करता है? तुम्हारे पूरे कंप्यूटर को रन करता है. दिस इज हाउ आवर बॉडी ऑल्सो वर्क्स. Our body is totally controlled by our brain. We cannot control our brain. Brain is controlling us. Okay. So we require all sort of devices. So there are two devices: central nervous system, peripheral nervous system. अब now, just like computer, you have something known as input device and output device. So let's say this is input device: keyboard, and mouse. These two are input device. So what you do, you give input to the computer, and against that computer gives you output on the screen. Okay, now let's compare this function with our body. What happens is we have something known as
sensory nerves. Sensory nerves, also known as efferent. Efferent. I'll tell you how to remember all this thing, no issue. Efferent. Okay. अब आपकी body, it responds to some kind of pain, responds to some kind of smell, touch. What are these things? If I'm touching you here, exactly your brain knows कि मैं कहाँ टच कर रहा हूँ आपको. मैं दो फिंगर से टच कर रहा हूँ, दो फिंगर से. Your body exactly know this 2 point distinction कि मैं दो उंगलियों से टच कर रहा हूँ. Even if it's so close, even if it's so close, then also you can understand your body is being touched. Okay, how it is possible? So we have something known as sensory. Let's compare it with our mouse and keyboard. इसने क्या करा, इसने इनपुट दिया. सर इनपुट किसको दिया? सर इसने इनपुट दिया ब्रेन को. It is giving input to the brain. It is giving input to the brain. Now understand, if this touch, this pressure, now let me call all this thing as stimuli. Okay, let's call all this thing as stimuli, which is providing a sensation to the sensory nervous system, which is activating the sensory nerves. Okay, so these are known as stimuli. ये stimuli कहाँ गई? Efferent fiber से brain तक गई. Now imagine if this stimuli is a pain stimuli or a heat stimuli. ठीक है, तो क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, जब होता है कि मम्मियां बोलती है कि बेटा किचन में दूध रखा है, जाके दूध उठाती हो. And we are so dumb sometimes, we just tend to use our bare hand and we touch, and we do the things like this. पता ही उसके बाद क्या होता है. So what happens is ब्रेन के पास जैसी एफरेंट फाइबर गई, ब्रेन ने क्या करा, ब्रेन ने एक चीज बोली बॉडी को कि भैया जल्दी से अपने बॉडी का मूवमेंट करो, उसे हटाओ, अदरवाइज यू विल गेट बर्न. हाउ इट विल हैपन? हाउ इट विल हैपन? ब्रेन विल सेंड another fiber another fiber to that body part, which is known as motor nerve. This motor nerve will carry motor function, motor response. कि हाथ हटाओ, ये मोटर है, ये मोटर है. This motor nerve is also known as efferent. Efferent. So this is how it works. This is how our body function. Now let's relate it with our central nervous system and peripheral nervous system as a whole. So how I made a diagram? So I drew it like this. So this is our brain. With brain, there's a stem connected, that is spinal cord. Now, let me draw a hand. Let me draw hand. Okay, so this is hand. Let's imagine this is hand. So obviously, in hand we have muscles, we have other things also, our bones, our joints. We have. I'm just taking the example of hand. So what happens? Let's say something have pricked you. Pricked you. This is a pain response. Suddenly, which fiber of yours will be activated? Sir, your sensory fiber will be activated and will take the sensory information to your brain via spinal cord, obviously. The brain will tell you, okay, you are being pricked, you are being pricked, you are being pricked. Who told you this? Your brain via spinal cord to your hand. Please pull out the muscle. Please pull out your hand. अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी दिक्कत है. चलो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ये एफरेंट था एंड ये इफरेंट था. अब दिक्कत क्या है? चलो किसी ने ऐसे प्यार से टच करा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं. अब किसी ने सच्ची बड़ी जोर से मारा हो. लेट्स इमेजिन यू आर बीइंग प्रिक्ड so hardly. What is the main function that time? Your body needs to prevent that injury. अच्छा, जब कोई भी चीज हम फंक्शन करते हैं तो क्या होता है? जब फंक्शन करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करता है, बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ हाथ ऐसे जा रहा है. कभी कभी क्या होता है कि
that function is very jerky. You tend to withdraw your hand and slap someone else. This is reflex action. This is reflex action. What happens in reflex action? Okay, let's imagine you are being pricked now. If whole of this efferent fiber will take the information to the brain and brain will give you signal that please withdraw your hand. Too late. Already blood loss. तो इसके लिए बॉडी ने एक बहुत अच्छा चीज बनाया. बॉडी ने क्या करा? बॉडी ने बोला यार मैं ब्रेन तक जाऊंगा ही नहीं. ब्रेन तो कोऑर्डिनेट ही करेगा ना. ब्रेन तो कोऑर्डिनेट ही करेगा ना. तो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स डू वन थिंग. हम क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से पूछ लेते हैं. देखिए स्पाइनल कॉर्ड अगर मैं दिखाऊं ऐसे बीच से काटना, ऐसे ऐसे, तो स्पाइनल कॉर्ड लुक्स समथिंग लाइक दिस. स्पाइनल कॉर्ड लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो होता क्या है इन रिफ्लेक्स एक्शन, इन रिफ्लेक्स एक्शन एफरेंट फाइबर लेके जाती है, बट इट इज सपोज टू गो टिल हेयर, बट ये बोलती है बहुत लेट, नहीं बचाओ. तो क्या होता है, एफरेंट फाइबर यहाँ आती है, एफरेंट फाइबर यहाँ आती है और व्हाट इज हैपनिंग, एफरेंट फाइबर यहाँ आती है और यहीं से टर्न कर जाती है स्पाइनल कॉर्ड से. स्पाइनल कॉर्ड से टर्न कर गई. अब जब स्पाइनल कॉर्ड से टर्न की तो क्या आपका ब्रेन इन्वॉल्व हुआ? नहीं, ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ. ब्रेन ने बताया ही नहीं कि कितना मूवमेंट करना है. तो क्या होता है जब ये एफरेंट फाइबर यहां से टर्न की और यहीं से मोटर रिस्पॉन्स को लेके आ गई, बोली मैं नहीं जा रही इतने ऊपर, मोटर रिस्पॉन्स लेके आ गई इफरेंट के साथ. अब यार ये देखो एक सिंपल सी बात है, ब्रेन ने कोऑर्डिनेट ही नहीं करा, ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ. तो will our movement be smooth or jerky? Our movement would be very jerky. But understand what is the main motto to prevent this part of your body. तो कभी भी कोई चीज गर्म छूते है तो क्या होता है, we tend to remove our hand very fast. This is, this whole action is known as reflex, reflex action. And this arc that is formed here, this is known as reflex arc. समझ में आया? समझ आया किस तरीके से पूरा फंक्शन हुआ? तो इतना याद रखना कि ब्रेन तक अगर कोई भी सिग्नल नहीं जाता है तो इट इज जर्की. ब्रेन के बाद हमारे वी हैव सेरिबेलम. सेरिबेलम आल्सो कोऑर्डिनेट्स, इट मॉड्यूलेट्स एक्चुअली द सिग्नल. सिग्नल को ठीक करता है, तोड़ मड़ोड़ के ऐसे करके चलो बिल्कुल सही सिग्नल बनाओ. बट व्हाट हैपेंस विद स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेरिबेलम, मतलब हमारा ब्रेन. एंड जब ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट बहुत जर्की होने वाले हैं. होता है ना व्हेन वी डू रिफ्लेक्स एक्शन, कभी कभी ऐसे करके हाथ दीवार में लग जा रहा है, कभी इधर कर रहे इधर चला गया हाथ, बट आपने यहां से बचा लिया उसको, इट पेन स्टिमुलाई से बचा लिया. दिस होल फंक्शन इज रिफ्लेक्स एक्शन. So it is a protective mechanism. It is a protective mechanism. We need to understand this. So I hope you guys understand. चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. ओके बाय बाय.